Good morning, students. Today we will start our new chapter of grammar, English language, that is chapter 32, guided composition. Now see what is inside this guided composition. In this segment of writer's world, you would be writing guided compositions. In this chapter, you will try your hands on the following: writing biographical sketches, writing dialogues, writing reports. इस guided composition में हमें यहाँ पे तीन चीज़ों पे हमें यहाँ काम करने को मिलेगा. वो है राइटिंग बायोग्राफिकल स्केच, राइटिंग डायलॉग एंड राइटिंग रिपोर्ट्स. So now see, writing biographical sketches. You have already read in the previous classes that biographical sketches are written of eminent personalities. जो biographical sketches होते हैं वो eminent personalities यानी कि प्रख्यात व्यक्ति, जो popular personalities होते हैं उनके बारे में लिखी जाती है. आपने जैसा कि पहले ही previous classes में अपने पढ़ा है. In a biographical sketches, the major events of life history of a famous person are given. एक बायोग्राफिकल स्केच में मेजर इवेंट्स जो होते हैं एक व्यक्ति की लाइफ की हिस्ट्री के, जो भी एक पर्सन है आपका फेमस पर्सन जो है उसकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में, उसकी लाइफ की करियर में या जो भी चीज़ें उसकी लाइफ में होती है उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो मुख्य चीज़ें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में होती है, लिखी होती है. यू आर सपोज टू डेवलप अ राइट अप फ्रॉम द गिवन आउटलाइन. आपको एक सपोज किया जाता है कि आप इन आउटलाइन से एक रूपरेखा यहाँ पे दी जाती है कि आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के एक बायोग्राफिकल स्केच जो है आप लिखेंगे. सो सी, keep the following points in mind for writing good biographical sketches. Now see, first point is study the notes carefully. जो भी notes आपको यहाँ दिए होते हैं वो famous personalities के बारे में, उसको आप carefully पढ़िए. उसके बाद आपको then write the biographical sketches with the help of the given notes. तो given notes की help से आपको फिर biographical sketch आपको लिखना चाहिए. फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में होता है ये कि you are given just the dates and incident that occurred in a person's life. You have to make appropriate sentences giving complete information about him or her. यानी कि जो इंसिडेंट्स होते हैं डेट वाइज दिए होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, जो भी होता है फेमस पर्सन की लाइफ में, वो आपको अप्रोप्रिएट एकदम सूटेबल और अच्छे सेंटेंस में सही तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट जानकारी देते हुए उस व्यक्ति के बारे में लिखना चाहिए. और नाउ कीप द फ्लो एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द टेक्स्ट इन माइंड. और आपको फ्लो और स्पॉन्टेनिटी यानी कि जो स्वच्छंदता या सहजता हम कह सकते हैं है कि एक इंसिडेंट जिस ईयर में हुई है उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जिस ईयर में जो चीज़ें हुई हैं उसको आपको ध्यान रखना चाहिए. आपकी एक फ़्लो होनी चाहिए राइटिंग की कि जो भी इंसिडेंट्स हैं वो आपके एकदम नेचुरली वो फॉर्म्ड हों, जो भी सेंटेंसेस हैं वो नेचुरली फॉर्म्ड हों, आपके जो स्टेप्स हों. पहले आप जो इंसिडेंट जिस ईयर में हुई है फर्स्टली आपको वो लिखना चाहिए, उसके बाद के ईयर्स में जो चीज़ें हुई हैं वो लिखना चाहिए. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए. टेक प्रॉपर केयर ऑफ टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रॉपर केयर रखें टेंस की, किस टेंस में आप लिख रहे हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं वो किस टेंस में आप लिख रहे हैं. एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका वो सही होना चाहिए. टेक केयर ऑफ प्रॉपर सिक्वेंसिंग of the chronological order of the incident that took place in the person's life or career. एक व्यक्ति के लाइफ में या करियर में जो भी इंसिडेंट्स हुई, जो घटनाएं हों, उनको आपको प्रॉपर सीक्वेंस आपका होना चाहिए. कालानुक्रमिक कह सकते हैं या क्रमानुसार, यानी कि जिस टाइम पर जो इंसिडेंट हुई है उसके बाद जो इंसिडेंट हुई है स्टेप बाय स्टेप आपको करेक्ट वे में लिखना है. जो भी इंसिडेंट हैं वो according to the time and period. Now the next point is avoid grammar, punctuation, spelling errors. आपको ग्रामर की, पंक्चुएशन की और स्पेलिंग की एरर्स का ध्यान देना चाहिए, उसको अवॉइड करिए. ऐसा होना चाहिए आपके साथ. Read the bio sketch to check whether everything is correct, covered, and make correction wherever needed. Revise it once again. बायो स्केच को आपको चेक करना चाहिए लिखने के बाद कि आपने सभी चीज़ें कवर की हैं, सारी चीज़ें आपने लिखी है, कोई छूटी तो नहीं है. एंड मेक करेक्शंस. और जहाँ भी आपको करेक्शन की ज़रूरत लगती है कि
कि किस स्टेप में आपने मिस्टेक की है या कहीं कुछ लाइन आपको मिस्टेक लगी तो वहाँ आपको ज़रूरी जो करेक्शन वर्क है वो करना चाहिए. रिवाइज इट अगेन वंस अगेन, इसके बाद फिर से आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए. एग्जाम्पल इज गिवन हियर. You can see an outline of the life of a popular athlete of India, P.T. Usha, given below. Use the given information to write her biographical sketch. यहाँ पे biographical sketch P.T. Usha का दिया हुआ है. 1964, born in an average middle class family on June 27 in the teeny Kerala village of Payoli, nicknamed Payoli Express for her speed on the track. 1977, created her first national record in the 100 meter. 1980, her debut in the Moscow Olympics was colorless. 1982, in New Delhi Asiad, she could only win silver medals in the 100 meter and the 200 meter. 1983, at the Asian Track and Field Championship in Kuwait, Usha won a gold in the 400 meter with a new Asian record. 1983 to 89, Usha generated 13 golds at ATF meets. She finished her first in the semi-finals in the 1984 Los Angeles Olympics, but faltered मतलब कमज़ोर पड़ना होता है, faltered in the finals. Also lost the bronze by one by hundredth of a second. So now see on next page. Here again all incidents are given of the P.T. Usha by year. 1986, in year 1986 in the Seoul Asiads, just 22 years old, Usha crowned herself Asia's sprint queen by winning the 200 meter, the 400 meter, the 400 meter hurdles and the 4x400 meter relay. रिले मतलब वास्तव होता है, हर्डल्स मतलब वन ऑफ अ सीरीज ऑफ अपराइट फ्रेम ओवर विच एथलीट्स इन अ रेस मस्ट जंप. 1987-1991, Usha grew from strength to strength on the Asian scene. She had become an icon for Indian women athletes and a living legend in Kerala, where streets and newborn babies were regularly named after her. 1998 year, in this year, 34 years old and a mother, Usha won bronze in the 200 meter and the 400 meter at the Asian Track and Field Championship in Fukuoka, Japan. So now here is the answer given in your book. Bio sketch of P.T. Usha, nicknamed Payoli Express for her speed on the track. P.T. Usha was born on June 27, 1964 in the teeny Kerala village of Payoli. She created her first national record in the 100 meter in 1977 and when she was just 13 years old. Her debut means प्रारंभ होता है. Her debut in the 1980 Moscow Olympics was colorless. In the 1982 New Delhi Asiad, she could only win silver medals in the 100 meter and the 200 meter. But at the Asian Track and Field Championships in Kuwait in a year later, Usha took gold in the 400 meter with a new Asian record. Between 1983 to 89, Usha garnered 13 golds at ATF meets. She finished first in the semi-finals in the 1984 Los Angeles Olympics, but faltered in the finals. Usha lost the bronze by 1/100th of a second. In the 1986 Seoul Asiad, just 22 years old, Usha crowned herself Asia's sprint queen by winning the 200, the 400, the 400 meter hurdles and the 4x400 meter relay. The next 5 years saw her go from strength to strength to the Asian scene. By 1991, P.T. Usha had become an icon for Indian women athletes and a living legend in Kerala, where streets and newborn babies were regularly named after her. A spark of the old fire was glimpsed in 1988. She was 34 years old and a mother when she won bronze in the 200 meter and the 400 meter at the Asian Track and Field Championships in Fukuoka,
Japan. So now see, in this answer given in the book, as example you can see कि कितनी अच्छी तरीके से बायो स्केच जो है पीटी उषा का तैयार किया गया, कि ईयर सिस्टमेटिकली ईयर क्रॉनिकल एंड सीक्वेंस वे में है, क्रॉनिकल ऑर्डर में है, वन बाय वन स्टेप्स आर फ्रेम्ड इन अ मीनिंगफुल sentences by taking proper care of grammar and punctuation marks. So that's all for today. In this part of the video, all of you please read carefully the guided composition and its points. Thank you. That's all for today.